पैंडेमिक की वजह से जो चीज़ें डिजिटाइज नहीं भी थी उनको भी ज़बरदस्ती डिजिटाइज होना पड़ा. However, the online classes that you are attending right now is something which is not very unique. So, I'm happy to burst your little bubble and tell you that online and distance education is something which has existed long before you were ever introduced to it. The only difference is that people have always ignored online and distance education as a legit mode of education. So, we at College Vidya are here with another video about debunking all those myths related to online and distance education. और जिन लोगों ने मार्केट में ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की रेप्यूटेशन खराब कर रखी है उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो. मिथ नंबर 1, ऑनलाइन कोर्सेज हैव ज़ीरो वैल्यू ऑन द जॉब मार्केट. This is absolutely false. In fact, graduate schools and employers recognize the burden and the constraints a student might have, and therefore they understand why a student need to go through a distance and learning education program. In fact, right now, the market value of distance learning programs is so high as they have given skills to the student in the careers of their own choice. Also, there's no technical difference between a degree obtained either from a regular college or from a distance education mode. Therefore, the employers and the graduate schools encourage students to go through distance and online learning programs. Myth number 2, distance learning courses are stupid simple. ये सरासर झूठ है. Just because distance and online education mode offers students a bit more flexible schedule doesn't mean that the course structure and the evaluation structure will differ. So students think कि अगर हमने online and distance education mode से कर लिया तो it's gonna be a long vacation and we just have to log it for a few minutes to prove that we took classes. Well, the truth is that the course structure and the evaluation structure remains the same for both the degrees, either from a regular college or from a distance education program. Myth number 3, professors who teach online classes are not real professors. This is absolutely false. Universities don't just pick anybody to teach their classes. In fact, the truth is that जो faculty तुम्हें regular classes पढ़ाएगा वही faculty तुम्हारी distance and online education mode में भी classes लेगा. In fact, some of the classes are taken by well-renowned personalities in the particular field of subjects that they are teaching. तो ये faculties चाहते हैं कि इनका जो teaching है वो कुछ बच्चों में नहीं बहुत सारे बच्चों में जाए. इसीलिए they prefer that with regular classes teachings, they also take online and distance education classes. Myth number 4, you will have no interaction with classmates. This is absolutely false. मतलब इंडिया में बैठे बैठे तुम यूएसए में किसी से बात कर सकते हो बट तुम्हें ये लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में तुम किसी से इंटरैक्ट ही नहीं कर पाओगे. Well, since online classes are in a moderated form, they encourage students to speak up. Well, as compared to the classes in a lecture hall where only a few students get the chance to speak up. Also, इन classes में course structure और evaluation structure ऐसे डिज़ाइन होता है कि हर बच्चे को बोलना ही पड़ेगा. और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर तुम इंट्रोवर्ट टाइप के बंदे हो तो तुम ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो. मिथ नंबर 5, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन इज ऑल लेक्चर्स एंड नो लर्निंग. यार ये तो सरासर झूठ है. I mean, video lectures are definitely a part of online and distance programs, but distance programs is way deeper than that. I mean, since you don't have attendance का झंझट, you have the option, rather the privilege to work while you study. This benefits you as you're gaining much more practical knowledge than you would in a regular class. और इसके साथ ही साथ तुम वेरियस स्किल बिल्डिंग कोर्सेज भी कर सकते हो जो तुम्हारे रेज्यूमे में बूस्ट करेंगे और तुम्हें किसी भी जॉब के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बना देंगे. मिथ नंबर 6, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड डिग्रीज will not add much weightage to my CV. This is absolutely false. See, अगर तुम्हें अपने स्टेट के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज मिल रही है तो तुम्हें रेगुलर कॉलेज से जाना चाहिए. अदरवाइज इट इज फार बेटर टू गो टू अ रेप्यूटेड कॉलेज हु ऑफर्स यू डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें रेगुलर कॉलेज के थ्रू नारसी मुंजी में MBA में एडमिशन नहीं मिला तो तुम वही सेम कोर्स डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन मोड से कर सकते हो. इससे तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा कि चाहे तुमने डिग्री ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड में ली है बट जो नारसी मुंजी का ब्रांड वैल्यू है वो तुम्हारे CV में ऐड हो जाएगा. देखो, टेक्निकल डिफरेंस कोई भी नहीं होता है दोनों डिग्रीज में. सो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज यू आर ऑल सेट. मिथ नंबर 7,
Online and distance education classes is all fun and no work. It is true that online and distance education classes can be done at your own pace, but there still exist assignment deadlines and exams which need to be submitted for evaluation. So you cannot be a procrastinator यार, मतलब तुम ये नहीं वेट कर सकते कि एग्जाम्स आएंगे तो तब हम पढ़ लेंगे. No, you have to assess yourself on weekly basis. और ये तुम कैसे कर सकते हो? ये तुम मॉक टेस्ट और सेल्फ एनालिसिस टेस्ट के थ्रू कर सकते हो जो तुम्हें LMS में प्रोवाइड किए जाएंगे. See, looking at the consequences of this pandemic, I would say that distance and online education programs is the future of India. See, all the traditional classes have been disrupted by this COVID-19 pandemic. So instead of going to a regular college and attending the same online classes which you would in a distance and online education program, why not save your money and your time? So this is the time to take your education into your own hands and stop believing everything you hear.